Assalamu alaikum dear audience, welcome back to another YouTube tutorial from Naeem Bukhari YouTube channel. So today lecture is about cellular adaptation. We will discuss what are the cellular adaptation, how cells adopt certain environment, what are the changes usually cells face in external and internal environment, what is homeostasis, what is stasis, what is cellular injury. We will discuss in detail. So before moving forward, if you are new on my channel, so subscribe the channel and press the bell icon to hear about more videos. So what are the cellular adaptations? Cellular adaptations occur due to some diseases, and some diseases represent spontaneous alteration in the ability of cell to proliferate and function normally. Means sometimes if cell is functioning normally and some diseases results in cellular change in cellular functions. So how change in cellular function occurs? Suppose in such situation cell must adapt to the new environment. Suppose if there is change within cellular external or internal environment, so cells will be able to adopt that change, or either cell will be able to adopt that change, or either cell will be able to unable to adopt that change. In case if cells will be able to adopt that change, what kind of changes or adaptation we will be able to observe? Those adaptations include hyperplasia, hypertrophy, atrophy and metaplasia. But if cells are unable to adopt that change, what will be happening? There will be chances of cellular injury. Suppose अगर हम लोगों के पास सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ जाती है या सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई चेंज आती है, तो उससे क्या होगा? या तो सेल उस चेंज को अडॉप्ट कर लेगा, उसको बियर कर लेगा, उसको फेस कर लेगा. इफ़ द चेंज इज़ माइनर और इट्स पोटेंसी इज़ लिमिटेड, सो देन वी कैन से दैट चेंज विल बी मैनेजेबल एंड cells will adopt a new environment in response to that change. And that change or that adaptation which cell usually follows includes like hyperplasia, hypertrophy, atrophy and metaplasia. But if cell will not able to adopt that change, means अगर वो change बहुत severe है, तो what will be happening? उस change से cellular degradation हो जाएगी. Okay, the first change includes hyperplasia. Hyperplasia usually represents increase in cellular number. Means if there is some change in external environment, तो cell क्या हो कि cells की multiplication ज़्यादा होनी start हो जाए, cells multiply होना start हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? Hyperplasia. और hypertrophy, अगर हम लोगों के पास जो सेल का साइज़ है वो बढ़ जाए, तो इसका मतलब है कि सेल का साइज़ भी बढ़ सकता है इफ़ देयर इज़ सम एक्सटर्नल चेंज विद इन द सेलुलर इन्वायरमेंट और इंटरनल चेंज विद इन द सेलुलर इन्वायरमेंट. तो सेल्स का साइज़ भी बढ़ सकेगा और सेल उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेगा. लेकिन अगर ऐसी हो कि दैट चेंज इज़ मच सवेयर, then what will be happening? Means there will be chances of cellular degradation कि सेल का साइज़ बढ़ा और इतना ज़्यादा बढ़ा कि उससे वो सेल्स बर्स्ट आउट हो गया, सेलुलर इंजरी हो गई, राइट? So hypertrophy is actually a manageable change within the cell, and that is also known as cellular adaptation. Another important change which occurs within the cell includes atrophy. Atrophy means shrinkage of cellular size. Usually in old age people, you people will be able to see their hands or their body cells seem very weak. जो ओल्ड एज लोग होते हैं, तो यहाँ पे मैं एक पिक्चर भी साथ में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जिसमें ओल्ड एज के लोगों के जो हाथ पाँव अगर आप देखें तो उनके हाथ पाँव वीक हुए थे, सेलुलर साइज कम हुआ होता है, जिसकी वजह से वो वीक सेल उनके सेल्स नज़र आएंगे आपको. यू कैन इवन विटनेस दोज टिश्यूज़ विच आर representing weak cells, and this results due to cellular adaptation due to atrophy, due to shrinkage of cellular size. But in case of metaplasia, the third one, cellular adaptation, there will be multiplication of cellular numbers. Cells will be multiplying डिपेंडिंग अपॉन वेदर द स्टिमुलस इज़ नॉर्मल और एबनॉर्मल. अगर वो जो चेंज, जो सेलुलर चेंज है वो नॉर्मल है, तो देन सेल विल बी एबल टू रीगेन दियर नॉर्मल पोजीशन. कि हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी, मेटाप्लेजिया से देयर विल बी नो इम्पैक्ट एट ऑल, और देयर विल बी नो विजिबल और मैसिव इम्पैक्ट एट ऑल. बट इन केस इफ़ देयर इज़ अ पैथोलॉजिकल चेंज, कि वो जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई था जिसने सेल्स में चेंज लेके आई है, इफ़ दैट स्टिमुलाई इज़ पैथोलॉजिकल, कोई वायरल एजेंट है, कोई बैक्टीरिया है, तो दैट कुड ब्रिंग अ लॉन्ग लास्टिंग चेंज और उससे सेल्स की डेथ हो सकती है, सेलुलर इंजरी वुड बी पॉसिबल. सो मीन्स cellular adaptations ultimately depend upon their stimuli. Either those stimuli are normal or abnormal. Cells can adapt to the certain point. If the stimulus continues behind that point, failure of the cell and hence organ can result.
means if there is a adaptation for a longer time period, then there will be cellular death. Cells will be unable to survive against that stimuli. Perfect. Over here, if I will quote an example, so you can see in this example, there is a normal cell, right? And there is a change in cell, okay? The change in cell occurred and the cellular injury was possible, and at the end, once cellular injury was occurred, the chances of cellular death will be sure कि सेल में यहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलाई था जिससे सेल बर्स्ट आउट हो गया, सेल की इंजरी हो गई, और सेल की इंजरी हो गई तो इस मीन सेलुलर कंटेंट वाज लॉस्ट एंड दिस विल एंड अप विद द सेलुलर डेथ. In other case, here you can see there was just change in cellular size, but there was no injury associated, mean stimuli was normal, and which ended up with the change in cellular shape, and then we can say this change was adaptable and this is just hypertrophy. So we will study further after in the next class. Stay blessed.